Good morning, guys. So this is where we are staying. It's a lovely property. एकदम पहाड़ों के बीच। ये जो पेड़ है इसका नाम कुछ बोला, लेकिन मैं भूल गया। थोड़ा डिफिकल्ट है। This is our room. And this is actually the meeting area. You can have tea, coffee and all that. And there is Kalia standing with his other friends. Hello. Morning. Good morning. Good morning. क्या हुआ जैसे को? What's happening? Good, good, all good. आ जाओ, जगमोहन जी चाय पे बुलाए। चाय पे? हाँ, गया आगे। तो हम लोग अभी निकल रहे हैं इंडिया सियाचिन बेस कैंप की ओर। फिर आई थिंक लौटते हुए पैनामिक जाएंगे। पैनामिक में हॉट स्प्रिंग है, फिर वहाँ से वापस। ये प्रॉपर्टी बहुत अमेजिंग है। आई थिंक इट्स मिडल ऑफ द माउंटेन एंड विथ लॉट ऑफ ट्रीज एंड ऑल दैट। कल हम लोग जल्दी सो गए थे। वी फिनिश्ड आवर डिनर बाय 9:30 and got bed early. आज एक्चुअली मैं सोचा था थोड़ा रेस्ट कर लूँ, क्योंकि बहुत सारा डेटा कभी डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करना था जो कि शाम को आके करना पड़ेगा। Wow. Morning is so pleasant, 18 degrees centigrade. There's a temperature. This is a monastery I had gone yesterday.
I'll be crossing that bridge. We'll cross one by one. This is our road to Siachen, India Army Base Camp. बिहारा रोड बहुत ही अच्छा बना है. These have been made to so that Indian Army can access the all critical areas, since these are all border areas, so that vehicles movement can be made easy. ये रोड थोड़ा नैरो है, लेकिन बड़ा ट्रक तो चला ही जाएगा. फिर हम लोग रिवर का बेसिन का लेवल तक आ गए. वाओ, लुक एट दिस. इंस्टा भाई को जगाता है. मैसिव मैसिव मैसिव. थैंक गॉड मेरा वाटरप्रूफ बूट है, लेकिन वाटरप्रूफ मैंने सॉक्स नहीं पहना. आई थिंक थोड़ा जब तक जिसको वाटरप्रूफिंग है तब तक ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा भीग गया लग रहा है. सफ़ेद सैंड, जिधर भी देखो सिर्फ पहाड़ पहाड़ पहाड़. एक स्ट्रेच है बहुत ही बैरन है. एक स्ट्रेच है जहाँ पे बहुत ही पेड़ पौधे हैं, ग्रीनरीज है. कुछ एरियाज जो है मिक्स्ड है. आई थिंक दिस इज अगेन बैरन साइड ऑफ द लैंड. चेक पोस्ट है. Ouch. Lovely place. So this is called army discipline. अब एक बार भी आगे नहीं आया. Your job was to sweep. You're still in this position. Lovely view, huh?
सियाचिन का जो चेक पोस्ट है वो क्रॉस कर चुका है. सो वेट टू एंटर आवर व्हीकल डिटेल्स, बाइक डिटेल्स एंड ऑल दैट. So there is a war memorial in Siachen, so we'll visit that. As I said, that this theme of this trip is that tribute to the bravehearts. So we are covering war memorial. So yesterday, you know, this people were discussing about how this the Siachen border was covered by Indian Army. So I think RAW had informed the ministry that Pakistan is buying some 500 odd winter suits from some foreign agency. So initially they were a little confused at why Pakistan is buying so many winter suits of that grade. Then they could realize that they are going to deploy soldiers out there, and कुछ तो सर इन लोगों के दिमाग में चल रहा है. Wow. So anyway, so India had again played some trick. Managed to delay those supply by a few months. So by that time India procured similar suits. This is very hard. This could be classified, this could be known fact, I'm not too sure, but this is what I heard. It's an old story, so I can share this. I'm sure it will not have any implication at the current date. So then India sent our soldiers first, made it protected, and then the supplier had supplied the suits to them. I think it is one that our intelligence played a pivotal role in getting such information right at a very right time, and then Indian government took immediate decision of putting up a right strategy and posting our soldiers before them. But definitely it's a very, very difficult posting. So during winter it is minus 50 degree, and during summer not many changes. I think it is really some minus 30 degree, minus 20 degree or so. So soldiers are posted here for 6 months, then they are been replaced by another set of soldiers. But very difficult tenure when they are posted here. अभी हम लोग प्लेन पे आ गए. So I can see a big ground here. Siachen restaurant. अच्छा, ये तो पूरा डस्ट है, सैंड है.
स्किट कर रहा है। इधर से जाना पड़ेगा धीरे धीरे। विजय ने आस्ते रास्ते दिखाया। So this is where our mental breakdown happens. जब घबरा जाते हो। हैंडल को डाबा कीजिए। निकल गया। चलो जी। So this is Siachen War Memorial. Let's go. हमको 2 कदम चलने में प्रॉब्लम हो रहा है, सांस फूल रहा है। I don't know how they would have spot here. Surround